Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 28th of July 2023. So firstly, moving to the main page. So Supreme Court, it extends Mishra's tenure. कल हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था. Who is the ED director till 15th of September. So government ने अक्टूबर तक डिमांड की थी, but 15 September तक का टाइम दिया गया है to the government. And top court, it goes back on its earlier judgment in the public and the national interest after center's appeal in the wake of the FATF evaluations जो चल रहे हैं. तो अगर मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में अगर हम डायरेक्टर को चेंज करेंगे तो वो सेंटर का मानना है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. तो ये रीजन देते हुए सेंटर ने थोड़ा और टाइम डिमांड किया था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. हाउएवर इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन. तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया है पहले ही. So Supreme Court to the center, it says that are you not giving a picture here that your entire department is full of incompetent people except for this 1%? मतलब आप डिमांड कर रहे हो कि जो करंट ईडी डायरेक्टर है आप उनके टेन्योर के एक्सटेंशन के लिए डिमांड कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो. तो कहीं ना कहीं आप ये पिक्चर डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि जो बाकी ऑफिसर्स हैं इन द गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट हैं एंड आप इसी डायरेक्टर को साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हो. सो इज इट नॉट डीमोरलाइजिंग फॉर द एंटायर फोर्स दैट एक्सेप्ट फॉर दिस 1% दिस एंटायर डिपार्टमेंट विल कोलैप्स. कि अगर आप करंट डायरेक्टर को हटा दोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है या ये आप मैसेज सेंड कर रहे हो टू द एंटायर ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर करंट ईडी डायरेक्टर विल नॉट कंटिन्यू in this position. So ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है और बोला है कि आगे आपको और बेसिकली अगर आप सेम डिमांड के साथ आते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगते हो तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा. Then CBI is going to probe the Manipur sexual assault and one killed as violence continues. So violence it is continuing. उसके अलावा CBI जो sexual assault के cases सामने आ रहे हैं वहाँ पे proper investigation करने वाला है. तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज है ऑपोजिशन से रिगार्डिंग. Then Supreme Court questions the Tamil Nadu's minister's argument against the ED action. So here this case हमने पहले बात करी है कि क्या ईडी की पावर्स हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि क्या ईडी अरेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता. सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो केसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस जो लगाए गए हैं इन द कैश फॉर जॉब स्कैम एंड द मिनिस्टर कंटेंड्स that judicial remand and not police custody is the natural corollary of the arrest under this PMLA Act. But PMLA Act के अंदर Supreme Court ने भी clearly बोला है कि ED can go ahead with the arrest. So Supreme Court bench says that can you say that everything concerning the investigation is over with the arrest and that there should not be further investigation even after arrest also. So ये कुछ concerns हैं, कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने रेज किए हैं. So G20 39 MNCs they come together for the circular economy coalition. So embracing a circular economy model, it enables transition from the linear make and then waste. मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आप बाय करते हो that is take, उसको मेक करते हो बेसिकली रॉ मटेरियल्स लेते हो. यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएनसीज बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरर्स बात की जा रही है कि आप पहले रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हो फिर आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको सेल करते हो और वेस्टेज होती है. सो सर्कुलर इकोनॉमी का आइडिया थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ पे आप ऑब्वियसली रीयूसेज की बात करते हो, रिसाइकलिंग की बात करते हो एंड ऑब्वियसली दैट इज मच मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिस. सो वो थोड़ा रीजनरेशन पे फोकस किया जाता है इन सर्कुलर इकोनॉमी. So launch of resource efficiency circular economy industry coalition on the sidelines of the 4G20 environment and climate sustainability working group and environment, all these ministers ये meetings हुई. Moving forward, coming to the editorial page. So यहाँ पे National Research Foundation bill की बात की जा रही है. The scientific community in India, it is abuzz with the curiosity and the excitement after the Union Cabinet's approval for the National Research Foundation Bill 2023 to strengthen India में जो research and development ecosystem है उसको strengthen करने के लिए
we are coming up with a National Research Foundation. And obviously कुछ concerns थे कि how much percentage of GDP जो भी हम spend कर रहे हो बहुत बहुत less है compared to the developed world जो research and development पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडिया उतना नहीं कर रहा है. फाइनल पॉइंट्स अगर हम इस बिल की बात करें तो आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग NRF as an independent foundation to promote and fund the research, it was mooted by Kasturi Rangan Committee in 2019. तो ये important fact हो जाता है for prelims and adopted in the National Education Policy also. So importantly, both these documents they mentioned that in no uncertain terms that the institutions they currently funding research such as DST and Department of Atomic Energy, Department of Biotech, Indian Council of Agricultural Research, Indian Council of Medical Research, Indian Council of Historical Research, University Grants Commission, as well as various other private and philanthropic organizations, they would continue to fund the research according to their priorities and needs independently. So मतलब फंड अवेलेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है और इनका इंडिपेंडेंट फंक्शन करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हर एक काउंसिल की जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट है तो जो उनके डिसीजंस होने चाहिए ऑब्वियसली उसमें भी उनको ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए. So that's important, and budgetary allocation for the NRF, it should not be reduced as growth in research and knowledge creation is linked to ample financial support, obviously. So this is a direct thing. So you can see यहाँ पे we have the data as well. And financial outlay की बात करें तो highlighting the lack of a conducive research ecosystem under investment in research, Kasturi Rangan Committee, it had said that NRF, it would get an annual grant of rupees 20,000 crores or 0.1% of the GDP. So it did not say how long this grant it would continue. तो इस चीज पे कोई बात कोई mention नहीं किया गया. It did not note कि research spending जो है country में it was at meager level of 0.65% of the GDP compared to United States में they are spending 2.8% of the GDP on research and development. China में they're spending 2.1%. And Israel is spending 4.3%. So USA में 2.8% is a very, very huge amount because it's a developed country and उनकी GDP obviously बहुत ज़्यादा है compared to India. So this is one of the concerns. So ये data आप note down कर सकते हैं. And greater relevance now, तो बात करें criticality of the research and knowledge creation, importance of enhancing the funding for the research, it has been amply highlighted by the new education policy में भी इसकी बात की गई है. It insists कि economic prosperity of many developed countries now and even the ancient past also, it can be attributed to their intellectual capital and to their fundamental contributions to the new knowledge in science, arts and culture. So even STEM की जो हम बात करते हैं, science, technology, engineering and mathematics, तो वहाँ पे भी fund availability for research and development बहुत important role play करेगा. So NEP, it argues that a robust research ecosystem, it requires greater importance now due to जो current scenario है, इसमें research and development की importance जो है, जो relevance है, वो और ज़्यादा increase हो जाती है because जिस pace से, जिस speed से challenges increase हो रहे हैं, diversity of challenges grow हो रहा है, तो research and development बहुत important हो जाता है. And we are seeing technological advancements भी कितनी speed से technology is evolving. So all of that, given this scenario, research and development definitely becomes one of the important areas where obviously we can't ignore that. Forest Amendment Bill की यहाँ बात की गई है. Hornet's nest in the Forest Amendment Bill. So लोकसभा ने पास कर दिया है Forest Amendment Bill 2023. And problem areas की बात करें तो Forest Conservation Act of 1980, which this bill aims to amend. तो इस act को amend करने की बात की जा रही है through this amendment bill. It admittedly and justifiably it adopted a rather protectionist stance, which made forest clearances time consuming and costly to obtain. तो ये area basically जो ये step था, ये time consuming था, obviously resource wastage भी हुआ इसकी वजह से. So the current development needs जो हमारी country की हैं, because हम एक साइड वी आर टॉकिंग अबाउट कि बाय 2047 वी एस्पायर टू बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड दूसरी साइड वी आर हैविंग दीज challenges. So priorities जो हैं they must be recognized. Bill it deviates in a significant manner from the spirit of the original law. तो वहाँ पे हमें deviation देखने को मिल रहा है. अगर हम 3 main points की बात करें that emerge from this bill, they have caused considerable consternation among the environmental experts. So अगर 3 मेन पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट द नैरो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होंगे, मतलब फॉरेस्ट की डेफिनेशन और ज्यादा नैरो कर दी गई है. सेकंड इज एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज. सो
बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज है जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। थर्डली इज ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शन टू दी एडिशनल एक्टिविटीज दैट वर रेगुलेटेड अर्लियर, मतलब कि आप जो फॉरेस्ट एरियाज में पहले एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती थी, अब वो इजीली आप कैरी आउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं it would be obviously leading to over exploitation of resources, more deforestation, and again जो आज के टाइम में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाएगी। So these need to be better explained. So that's there, and यहाँ पे we have one of the judgments, the landmark Godwarman judgment of 1996, which had extended the scope of the 1980 Act to the dictionary meaning of the forest. मतलब कि areas with the trees, मतलब सिंपल डेफिनेशन तक स्कोप इसका एक्सपैंड कर दिया गया था थ्रू दिस जजमेंट कि फॉरेस्ट एरिया वो एरिया जहाँ पे वी गेट ट्रीज रादर देन जस्ट एरियाज जो लीगली नोटिफाइड है एज फॉरेस्ट। सो all those areas and regions jahan pe we have trees planted, that would simply mean to be a forest and wo is law ke under bhi aayega. So this was the judgment in this case. So that's there. एंड इसके अलावा आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया में फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ट्री कवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है बायनली, मतलब हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है, तो उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। Then the bill excludes some of India's most fragile ecosystems, that is, as it removes the need for forest clearances for the security-related infrastructure up to 100 kilometers of the international borders. So, जो international border से 100 kilometer तक का area होगा, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज आ जाती है। तो एक ये चीज है। सो दीज इंक्लूड्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी, मतलब जितने भी जो भी चीज कवर हो रही है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो या हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट इन मिडोज हो, तो सब कुछ इसके अंडर आ जाते हैं। Then the bill introduces exemptions for the construction projects like जो जू की बात करें, जू कंस्ट्रक्शन, सफारी पार्क्स, इको टूरिज्म फैसिलिटीज, तो इनके ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस हैं। आर्टिफिशियली क्रिएटेड ग्रीन एरियाज हैं, एनिमल एनक्लोजर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम्स व्हिच प्रोवाइड अ बुके ऑफ ecosystem services that contribute significantly to the human well-being. So what is worrying is that bill, it also grants unrestricted powers to the union government to specify any desired use beyond those specified in the original or the amended act. तो ये provision, it is clearly showing the more centralization of power and discretionary power, I should say, सेंटर के पास में और ज्यादा concentrated तरीके से करने की बात ये amendment bill कर रहा है। So anatomy of the Yamuna floodplains, Delhi floods की बात करें यहाँ पे, how has the rampant construction it blocked the flood pathways, तो इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। Obviously अगर आप natural flow of river से उसको change करने की कोशिश करोगे तो obviously results आपको यही मिलेगा end में। And Yamuna floodplains पे जो construction activities की गई हैं, that is also one of the reason why we are in this situation. क्या consequences होंगे of the rapid urbanization, हमने इतना किया, then concretization की हम बात करें, तो all these are different factors and reasons why we are in the current situation, why we are facing the Yamuna floods in Delhi. So उसके बाद फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एंगल भी है, उस पर भी काफी बातचीत कर चुके हैं। सो दैट्स देयर। तो मतलब स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं, सो स्मार्ट सिटीज से बियॉन्ड क्या होना चाहिए, या स्मार्ट सिटीज में क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि वी आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, डिजास्टर मैनेजमेंट इज आल्सो अंडर कंसिडरेशन एंड ऑब्वियसली वो रीजन हर रीजन से वेरी करेगा। सो दिल्ली का मास्टर प्लान की यहाँ आउटलाइन की बात की गई है, सो आप इसको जस्ट गो थ्रू इट। सो दैट्स देयर। मूविंग फॉरवर्ड, so stapled visas for the Arunachal athletes is unacceptable. So External Affairs Ministry slams China's move, says that it will respond suitably. New Delhi agrees with the Beijing statement that Modi and Xi Jinping, they discussed the bilateral ties during the G20 summit in Bali last November. So terming China's decision to revive the practice of stapled visas for Indian sports persons from Arunachal Pradesh, it is unacceptable. सो ये इंडिया ने क्लियरली बोला है कि अगर आप इस
पुरानी पॉलिसी को रिवाइव करोगे, वाई मतलब ओनली फॉर द एथलीट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो कहीं ना कहीं basically China claims that Arunachal Pradesh it belongs to China, so it might be because of that, but obviously this is unacceptable to India. Then India is recognized as a voice of peace and security coming from our Union External Affairs Minister Jaishankar. So amid an unprecedented and complex geopolitical situation, India is now recognized as a voice that speaks for all and stands for peace, security and prosperity. सो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मतलब हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, व्हाट टर्म्स आर यूज्ड, टोन ऑफ दी सेंटेंसेस क्या है, सो दैट आंसर राइटिंग में इट कैन हेल्प अस. देन मूविंग फॉरवर्ड, so parliamentary panel says कि there is no accurate count of the persons with disabilities population. मतलब इंडिया में अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है कि how many people are PWD in India. So standing committee it asked the officials to use every resource to correctly estimate specially abled persons population until the census results they are out. So obviously this is something very basic जो होना चाहिए, but unfortunately it is not there. Already under fire from the rights activists and opposition over the dropping disability related questions in the sixth round of the National Family Health Survey Union government. It was pulled up by the Parliamentary Standing Committee on Social Justice Empowerment for failing to accurately estimate the population of persons with disabilities. So gig workers, they seek model law, एक law होना चाहिए proper which is dedicated for their rights of the gig workers, उनकी social security benefits के बारे में it needs to talk about. So आपको पता होना चाहिए, या आप सोच सकते हो कि अगर gig economy या gig workers के लिए government law लेके आती है तो क्या उसके provisions होने चाहिए. And recently we saw in the state of Rajasthan they have brought up this bill. Coming to the world page, so here we see, so mutinous soldiers, they claim to have ousted the Niger president. So defiant soldiers, they say all institutions, they had been suspended, security forces, they were managing the situation. Government says it will never accept the military rule and calls for public protest. So आपको बस पता होना चाहिए different countries में globally क्या situation है, क्या developments हो रही हैं. So Russia will try to avert a food crisis, Putin at the summit. So recently Russia ने withdraw कर लिया था from the Black Sea grains deal. So उसकी वजह से we might see कि globally food grain के जो supply है वहाँ पे we can expect disruptions. उसकी वजह से food inflation increase हो सकती है, and already we are struggling with controlling the inflation. Recently US Fed ने भी decided कि they had basically they have already increased the policy rate. So that is again inflation को control करने के लिए, inflation को कम करने के लिए, this is the decision, and कहीं ना कहीं ये negative impact डालता है growth के ऊपर. तो ये एक बोल सकते हैं एक dilemma, एक irony है कि मतलब central bank of a country have to decide between controlling of inflation versus growth. तो दोनों में balance करना काफी difficult task हो जाता है. Coming to business page, so we see government may extend this PLI scheme to chemicals and petrochemicals also. So India के अगर हम growth की बात करें तो manufacturing sector एक ऐसा sector है जहाँ पे huge potential है of growth, of job creation. So जो PLI scheme है, production linked incentive scheme, that is a step in that direction. And जो भी incremental output होता है उसके ऊपर government थोड़ा financial aid provide करती है. So obviously that percentage is already decided. So this is one area, and then obviously MSMEs बहुत important role play कर सकती हैं, तो that you need to know about. And reducing our reliance on imports, that is important in order to be self-sufficient country. And India should adopt new technology to benefit from the global players as well. So US Q2 growth, it unexpectedly accelerates to 2.4% despite the Fed rate hike.
तो कुछ नई चीजें भी देखने को मिल रही है, नई सिचुएशन इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, मतलब अगर फेड रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है तो वो ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब वो कैसे डालता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की जो बोरोइंग कॉस्ट है इन्वेस्टर्स के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बोरोइंग जो है वो, या फिर हम बोलेंगे ऑब्वियसली बोरोइंग कम हो रही है तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी आने वाले टाइम में कम होगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। और यूएसए में हमें देखने को मिला कि जो ग्रोथ है इट इज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि ग्रोथ इंक्रीज होगी, बट इट इज एक्सेलरेटेड टू 2.4% डिस्पाइट द फेड रेट हाइक। So this is something positive and good. Geopolitical, geo-economic volatility, it poses severe risk. So ये जो words हैं आपको इनका connotation समझना important है, आपको पता होना चाहिए geopolitically, geo-economically क्या globally चीजें हो रही हैं, क्या challenges हैं। So volatility जो हमें huge movements, huge fluctuations देखने को मिल रही है वो हमारे लिए challenge है, and that has become a major challenge even for the developed world, that is likely to result in the global upheavals over the next 6 months. And even जब हम developed countries की बात करें तो कभी कभी we also talk about, we find the mention कि are we really headed towards a recession or not. Specifically eurozone की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी clear indications यही मिल रहे हैं कि it is headed towards a recession. Coming to Financial Express newspapers, so let's see what the important topics for today. Shaping milestones, उत्तराखंड की प्रोग्रेस के बारे में बात की गई है. Focus on नवरत्न of development. So these are 9 major elements. Specifically अगर आप हिली स्टेट्स के लिए बात करो, टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी टूरिज्म फॉल बन सकते हैं, एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, देन ऑब्वियसली you can see जो pilgrimage sites हैं, even they are a good attraction for the tourists and the pilgrims. Multimodal connectivity, easing the traffic in the hilly states, then construction of roads. So capital expenditure is basically हमें यही overall अगर हम broader context में समझने की कोशिश करें through this example, this is what we can see. Then we see petrochemicals, they get a PLI boost. So हम देख चुके हैं schemes in the works and it envisages trade surplus. So Indian export sector की भी अगर हम बात करें तो क्या challenges हैं, क्या potential areas हैं जो हम explore कर सकते हैं, जहाँ पे we can grow given जो भी challenges हैं उनको हम कैसे overcome कर सकते हैं. तो आप एक और चीज के बारे में फाइंड आउट करोगे कि जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है अभी वी आर इन सरप्लस, सो उसके लिए भी वी आर सेपरेटली सीइंग कि आईटी कंपनीज हैं उनके लिए डिफरेंटली चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है. देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शी सेज दैट वी आर इन फेवर ऑफ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. सो मैं बात कर रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेफिनेटली इस पे अब हमारा फोकस है, देयरफॉर वी विल कंसिडर पीएलआई फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एज वेल. Then India seeking review of the FTAs with Japan and Korea. तो पहले ये बोला जाता था, काफी बोला जाता था कि जो हमने एफटीए साइन करे हैं क्या इंडिया को उससे बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है. तो स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज हमने काफी बात करी है. एफटीएज विद जापान, क्या इंडिया को फायदा हुआ या जापान को ज्यादा बेनिफिट हुआ इसके थ्रू. अगर इंडिया को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर क्या हमारे लिए ऑल्टरनेटिव है. हमें ऑब्वियसली वी कांट कंटिन्यू विद दिस एफटीए या वी कांट गो अहेड विद एफटीएज विद अदर कंट्रीज. सो FTA with ASEAN is ill-conceived. So this is the sentence or the statement coming from the union minister. So stakeholders, they were not consulted before these pacts were finalized. So stakeholder consultation is definitely very important. Experts का view होना, proper analysis, research and development यहाँ पे भी आ जाता है. सो यहाँ पे यू आर लाइक हैविंग, यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं कि जापान के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया की परफॉर्मेंस रही या बेनिफिट्स रहे. कोरिया के टर्म्स में भी वी आर गिवन कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स रहे टू कोरिया, दे वेंट अप टू जस्ट $6.6 billion from $4.7 billion in 2018-19. Imports जो increase हुए from Korea, that we see कि they've increased from $16.7 billion to $21.1 billion. So similarly exports to जो जापान की अगर हम बात करें, that remained flat at $5 billion during
लास्ट 5 सालों में हमारे एक्सपोर्ट जापान को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हुआ या कोई हमें मेजर इंक्रीज नहीं देखने को मिला। तो ऑब्वियसली वी कैन से कि कहीं ना कहीं जो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन किए विद जापान एंड कोरिया, इंडिया को इतनी हेल्प या इतना बेनिफिट उससे नहीं हुआ। So it's important to revisit them and जो भी changes required है, we need to do that. So government notifies one more scheme, that is rupees 30,000 crores safety buffer for the debt market. So rupees 30,000 crores is the safety buffer that is being provided by the government, and that is the corporate debt market development fund जो create किया गया है to act as safety net by investing in corporate debt securities at times of market dislocation with a view to stabilizing the markets. So market को stabilize रखने के लिए, ज़्यादा हमें fluctuations ना देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फिर व्हेन दिस फियर इट स्ट्रक्स पीपल्स माइंड, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, एंड उसके बाद अगर वी सी कि मतलब एक बार वो सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो नोबडी कैन स्टॉप दैट फियर, एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल. So set up the cyber protection authority to curb the digital financial frauds. So domestic payment frauds की अगर हम बात करें, ट्रेंड देखे financial 2021 से we have this trend, वैल्यू के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, so दोनों के टर्म्स में it has exponentially increased, मतलब बहुत मेजर इंक्रीज हुआ है specifically in terms of the value. So that's there, and it is we can say it is more than doubled. जो number of cases हैं, they have also more than doubled over this time period. So it's important to have a proper dedicated authority in order to deal with such crimes and cases. So to check the rising digital financial frauds, the Parliamentary Standing Committee on Finance, it has recommended the establishment of centralized overarching regulatory body, जिसको बोला जाएगा Cyber Protection Authority, on lines of the Directorate General of Civil Aviation. So it is recommended establishment of whitelisting framework by the CPA for the digital lending industry. मतलब हम बात करते हैं कि obviously digitization के, digital technologies के बहुत ज़्यादा benefits भी हैं, but at the same time cyber threat एक emerging challenge है. So that is obviously something which is important to tackle. So India should consider evolving its cyber security policy. होनी चाहिए dedicated cyber security के ऊपर एक proper law होना चाहिए. So that's important given the number of cases and the speed at which they are increasing. So we need to focus upon 5 major dimensions. First is we need to establish more dynamic and proactive regulatory framework होना चाहिए. That needs to be independent and autonomous. It needs to have the relevant and the required powers. Secondly, empower a centralized authority for cybersecurity, which can work with all the digital ecosystem participants in India. Third, we need to formulate fairer and more responsive consumer grievance redressal. So ये बहुत important element है. Fourth, strengthen the central and the state cyber security enforcement capabilities. तो दोनों के बीच में cooperation होनी चाहिए, smooth functioning होनी चाहिए. Lastly, we need to achieve closer global cooperation with other leading countries. So बाकी countries से उनके experience से अगर हम कुछ learn कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो definitely we need to go ahead with that as well. So rain deficit की जो हम बात कर रहे थे specifically in southern India, so that has also been wiped out. So that is again something positive news. But उसकी वजह से we are also seeing certain states are, facing this threat क्या, they are in this situation of floods. So southern states में भी, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पे भी people are dealing with floods. So pan-India rain is 7% above the long period average. South में it is at 9%. Lab grown diamonds. This is a very important topic. इसके बारे में आप थोड़ा और search करके थोड़ा और समझ सकते हो. Let's move on to Indian Express newspaper. So here, let's see the important topics that we have not discussed and taken up so far. So India pulls out of the games in China over the stapled visas for Arunachal athletes. So ये भी हम देख चुके हैं. So you can see in this picture Qutub Minar, the projection of laser lights on Qutub Minar during the inauguration of the central government's Mera Gaon Meri Dharohar program at Mehrauli.
सो विलेजेस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, पीस एंड ऑर्डर की आप बात करें, देन कल्चरल हेरिटेज की आप बात करें, सो एमएसएमईज का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन थिंक फर्दर अबाउट at these about these dimensions in the context of their contribution, their importance for India. स्पोर्ट्स की भी आप बात कर सकते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है. Make in India and Atmanirbhar Bharat. So it's a common thing, emerging semiconductor hub. सो सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. वाई सेमीकंडक्टर बेसिकली इंडिया का सेल्फ रिलायंस सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड किस तरीके से गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है इवन विद अदर कंट्रीज. यूएसए की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां से वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली. एंड ऑब्वियसली बात कर चुके क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए सेल्फ सफिशिएंसी, क्या हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो सब आप थोड़ा और समझ सकते हो. Moving forward, so let's see all what are other important topics for us. Explain page पे why SEBI is reviewing delisting norms and what method it may choose going forward. So again यहाँ पे revisiting the norms, the laws, क्या changes required है from time to time because challenges also keep evolving. So SEBI is reviewing the delisting norms. So what is the reverse book building process? ये क्या है? And what does delisting of securities mean? इसका मतलब क्या है? So delisting means removing the securities of the listed companies from the stock exchange. So stock exchange से जब किसी company की security को आप हटा देते हो, बेसिकली उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो या किसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो आफ्टर इट्स रिमूवल. So that is delisting. So simply delisting मतलब removal of that company from the stock exchange. So once आप delist हो जाते हो तो securities of that company you can no longer trade them on the stock exchange. So this is one thing. Delisting आप voluntarily भी कर सकते हो और ये compulsory भी हो सकता है. So अगर कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करना चाहती है, सो इट नीड्स टू बाय बैक 90% ऑफ द टोटल इशूड शेयर्स. सो कंपनी को 90% बाय बैक करना पड़ता है. सो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? सो इट इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर प्राइस डिस्कवरी. सो प्राइस डिस्कवरी के लिए वी यूज दिस process during this period, basically during the period for which the reverse book building it is open. It offers are collected from the shareholders at various prices which are above or equal to the floor price as well. So buyback price then it is determined after the offer closing price. So थोड़ा technical है. And then problem की बात करें with this process, so इस process में क्या problem है? So SEBI chairperson has said कि there are certain constituents in the market in an anticipation of delisting. They acquire the shares and they jack up the price of shares to unsustainable levels. मतलब यहाँ पे भी अपना vested interest रहता है companies का कि बायबैक कर लेते हैं, शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है एंड ऑब्वियसली वो उनको बेनिफिट करता है बिकॉज उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है. सो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, कंपनी की जो रेपुटेशन है, बिकॉज ये एक माइंडसेट रहता है कि अगर हाई लिस्टेड शेयर प्राइस है तो कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. And because of the way in which it is formulated and because of the 90% threshold जो decided level है, there is possibility of misuse by certain operators who are specialist in delisting of shares. So जो experts हैं, specifically जो experts हैं in the delisting of this process, तो वो कहीं ना कहीं misuse भी कर सकते हैं. So this their business model basically it is wherever there is an anticipation of delisting, जहाँ पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे possibility है to go and garner 10% or more shares amongst their own like-minded persons, and at the time the delisting proposal comes to extract a higher price which need not always be a fair price also. So it's not important delisting price हमेशा एक fair price होगा. So SEBI किस चीज के बारे में रिव्यू करने वाला है? So SEBI it has said that it has been thinking of reviewing the delisting regulations for some time. So regulator has said that it has received the recommendations of the committee headed by KK Mistry, the former vice chairman and CEO of the HDFC Limited on delisting norms, and it would soon seek the comments also from different stakeholders. So regulator SEBI it has said it may allow the companies to delist the shares at fixed price instead of using the reverse book
building mechanism, so सेबी fixed price पे ही allow करेगा, and इस चीज पे थोड़ी बात की जा रही है in terms of reform. So cinematograph bill, it has been passed in the Rajya Sabha, and इसके क्या provisions हैं? So according to the official Cinematograph Act जो है 1952 का, it needed to be amended for several reasons. Obviously ये Act 1952 का है, now we are in 2023, तो definitely changes तो required हैं. इस आज के टाइम में अगर हम बॉलीवुड की बात करें या सिनेमाटोग्राफिक्स की बात करें तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं. सो टू हार्मोनाइज द लॉ विद वेरियस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स रही है वो द टाइम पीरियड उसके मतलब ऑन दैट लाइंस इट इज इम्पोर्टेंट टू अमेंड दिस एक्ट. एंड बाकी जो लेजिस्लेशन आई, सो टू इम्प्रूव द प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग फिल्म्स for the public exhibition and to expand the categorizations for the certifications. Importantly, there was huge demand from the film industry also to address the issue of unauthorized recording and exhibition of the films and curb the menace of piracy, which is causing them huge losses. So ये कुछ challenges हैं, कुछ problems हैं जब हम Bollywood की बात करते हैं, film making industry की बात करते हैं. So that's there, and showing films on TV. So as the Cable Television Networks Act has stipulates that only the UA category films सिर्फ आप वही टीवी पे शो कर सकते हो. Bill allows for change of category of the film from A, which is adult, and S as the specialized groups, to UA for after making suitable alterations. So the new bill clarifies कि center it will not have any revisional powers over the CBFC certificates. So एक ही important provision है. Piracy की बात करें, recording और helping a person record any film which is being exhibited at cinema पे अगर आप मतलब record कर लेते हो, so basically that has been prohibited under this bill, and film industry is facing a loss of rupees 20,000 crores annually because of piracy. So while inserting new clauses for piracy, the bill aims to harmonize the Cinematograph Act with the existing laws that tangentially it addresses piracy problem. तो यहाँ पे अगेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो भी रिसेंट अमेंडमेंट किया गया उसके बारे में बात कर चुके हैं. फॉरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये जो अभी हमने 100 किलोमीटर वाले एरिया की बात करी कि वहाँ पे आपको उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट अब नहीं होगी, तो वो एक कंसर्न है. कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट भी है, बट एक अगेन कंसर्न भी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द इकोसिस्टम, सेफ्टी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा व्हिच वी फाइंड इन सच एरियाज. So this could result in greater human displacement also. Yes, this is also one of the points, and heightened internal security risk as well. So ये कुछ और बातें हैं इसके बारे में. So that's all for today, and thank you so much for joining us. And do subscribe to the channel and hit the like button for the video. Thank you so much.